Good morning and warm welcome to you all. I am Vaibhav, your host for today. Our topic for today is Decoding Budget 2025. It's taken by CA Divya Somani. She is a partner at Rangamani Associates, Ajmer Branch HO, Kottayam, Kerala. She shall cover changes in income tax, changes in GST, schemes for women entrepreneurs, new avenue schemes for MSME, benefits for startups, followed by question and answer sessions. Our agenda for today is virtual inauguration by Dr. Sundar Kataria, invoking the blessing of deity, chanting of Gayatri Mantra, introduction of speaker, presentation by Ms. Divya Somani, question and answer session, and last closing session. About Sadgun Sangh. Sadgun Sangh conceived and led by Dr. Sundar Kataria, driven with a mission to elevate the quality, safety, and environmental awareness levels of industry. Sadgun Sangh is a series of educative, informative events aiming to illuminate professionals on possible solutions to current issues of industry and economy. A brief introduction of Dr. Sundar Kataria, designation and organization, Chairman and Managing Director, International Certification Services Private Limited. His academic qualification, Doctorate in Business Management, followed by Mechanical Engineer. His experience, Rajasthan Atomic Power Project, India's first nuclear power plant, RAPP at Rawat Kota, built by Indian engineers. Worked as nuclear scientist for 11 years and successfully completed and commissioned the plant. Engineers India Limited. First batch of engineers to develop Bombay High offshore oil and gas fields, mega offshore complex platform, trunk and submarine pipelines, underwater inspection, oil and gas equipment, etc. DNV, World Largest Classification Society, worked for 17 years at various capacity for the certification of fixed offshore installations, submarine pipelines, onshore projects, and personnel qualification. ICS. He is founder of India's first certification conformance assessment body established in the year 1999, provider of total quality solution. Certification of management system, that is ISO, inspection, testing, and training qualification of personnel. Achievements and awards of Dr. Sundar Kataria received Lifetime Achievement Award for the contribution for the corrosion technologies from NACE International by NIGIS under NACE USA. Social worker, protection of life, asset, environment, and safety. So now I request Kataria sir to please virtually inaugurate the session. कुरुत्वं कल्याणम् आरोग्यं धनसम्पदः शुभं कुरुत्वं कल्याणम् आरोग्यं धनसम्पदः शत्रुबुद्धिविनाशाय दीपज्योतिर्नमोऽस्तुते दीपज्योतिर्नमोऽस्तुते शुभं कुरुत्वं कल्याणम् आरोग्यं धनसम्पदः शुभं कुरुत्वं कल्याणम् आरोग्यं धनसम्पदः. Please join us for the recitation of the Gayatri Mantra. Introduction of our today keynote speaker.
A brief introduction of our today keynote speaker, designation and organization, partner at Rangamani Associates, Chartered Accountant, Ajmer Branch, HO, Kottayam at Kerala. Her academic qualification, Bachelor's in Commerce, Chartered Accountant, Diploma in Information System Audit, DISA, Diploma in International Financial Reporting Standards, IFRS, Company Secretary, Insolvency Professional. Her area of specialization and experience, guest speaker at series of G20 International Online Confluence, speaker at Sky High Symposium series conducted by Women and Young Member Empowerment Committee, speaker at more than 10 forums for financial and tax literacy drive conducted by Ajmer branch of ICAI, speaker on the topic A to Z about startups at Chittorgarh, Pali, Ajmer, etc. Speaker on the ocean of opportunities for MSMEs, various government subsidy schemes in various colleges, Jan Janashikshan Sansthan and other training centers to promote entrepreneurship. Please welcome Divya ma'am. Over to you, ma'am. I request everyone to please be there because there is some technical issue at ma'am place, so she will join within 2 minutes. Yeah, so Divya ma'am, please Definitely, you can welcome. start. Sorry, I'm late. Yeah, no issues, ma'am. So on the behalf of ICS team and all the participants and delegates, we'd like to welcome you, ma'am. So we can start, ma'am. Thank you. I can directly start. I can share my screen. Yeah, ma'am, no. Okay, just give me a second. पहले मैं ये जानना चाहूंगी हम में से यहाँ पे कितने लोग हैं जो कि एंटरप्रेन्योर्स हैं या प्रोफेशनल्स हैं। थोड़ा सा आप लोग चैट बॉक्स में डाल देंगे तो मुझे इजी हो जाएगा। एंड हम लोग इंग्लिश में रखें, हिंदी में रखें, मिक्स लैंग्वेज में रखें, दैट ऑल्सो यू प्लीज लेट मी नो। Keep in both languages. बोथ लैंग्वेजेस, ठीक है। एंड द क्राउड इज बेसिकली एंटरप्रेन्योर्स हैं कि प्रोफेशनल्स हैं। थोड़ा सा मुझे बैकग्राउंड चाहिए था। प्रोफेशनल्स हैं। प्रोफेशनल्स ही है, ओके सर। तो मैं एक बार स्क्रीन शेयर कर लेती हूँ। जस्ट गिव मी 1 मिनट। वैसे हमें ओवरऑल बजट कैसा लगा इस बार? सबको मेरे ख्याल से पहला पॉइंट तो ये है कि 12 लाख तक का कोई टैक्स नहीं है, तो सबसे अच्छी बात तो यही है। और उसके बाद अभी हम डिस्कस कर लेते हैं क्या क्या चीजें हैं जो हमें इम्पैक्ट करेंगी। हम इसको ब्रॉडली रखेंगे एंटरप्रेन्योर्स के पर्सपेक्टिव से, किस तरह से रहेगा, हमें अपने क्लाइंट्स को क्या सजेशन देना है, ये हमारा मोटो होना चाहिए। बिसाइड्स इनकम टैक्स एंड जीएसटी,
और हमें उनको क्या प्लान करके बताना है। ठीक है, ये चीज का हम फोकस रखेंगे आज के सेशन के अंदर। तो मुझे आप बता दीजिएगा एक बार, स्क्रीन विजिबल है क्या? काइंडली लेट मी नो इफ माय स्क्रीन इज विजिबल। Ma'am, it's visible. Just make it to full screen. या आई थिंक दिस इज विजिबल नाउ। ओके, तो जब हम बात करते हैं कि इस बार का हमारा बजट क्या रहा, तो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर जो हैं, निर्मला सीतारमण जी, शी मेंशन दैट दिस जर्नी ऑफ डेवलपमेंट, ओवरऑल जर्नी ऑफ डेवलपमेंट विच वी कॉल विकसित भारत, this depends on four engines of development. So she has categorized it into four categories like agriculture, MSME, investments, and exports. So the whole budget was categorized into these four engines, for which she has planned out a little bit for each and every sector. Broadly, if you talk about, there is a lot of investment which will be done by the government this time, and broadly they will also indulge into public private partnership also. So when we are dealing with our clients, we should convey the message that besides income tax and GST, there is a broader prospect which can be seen in this particular thing. Is my screen visible? Yes, yes, ma'am. I'm sharing from my side, ma'am. Is it okay, ma'am? Uh, it will be better if I can share from my side. Okay, ma'am. No problem. Okay. So it is not allowing me to share now, I guess. Okay. I think it is visible now. Yes, ma'am. ओके, तो पहले ऐसा हुआ करता था कि बजट का हम जब भी एनालिसिस करते थे तो हम ये देखते थे कि क्या चीज सस्ती हुई है, क्या चीज महंगी हुई है, या हमारे इनकम टैक्स की जो रेट्स हैं उनमें क्या फर्क आया है। लेकिन पिछले कुछ टाइम से जो ये बजट आ रहा है, इसमें आप देखेंगे कि ग्रोथ को लेके बहुत ज्यादा गवर्नमेंट अग्रेसिव है। अब वो बजट में तो दिखता है कि काफी सारे उन्होंने स्कीम्स बनाए, बट प्रैक्टिकली आप और हम सब जानते हैं कि इतना इजी नहीं होता इम्प्लीमेंटेशन, या फिर इनके स्कीम्स बनते हैं पेपर्स पे लेकिन इम्प्लीमेंट नहीं हो पाते, जो भी चीजें हैं। बट स्टिल द गवर्नमेंट इज एग्रेसिवली फोकसिंग ऑन वेरियस ग्रोथ एस्पेक्ट्स, जिनसे कि हम अपना इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी भी बढ़ा सकते हैं, क्लाइंट्स को भी हम गाइड कर सकें कि कहाँ किस सेक्टर में आप जाएंगे तो बहुत सारे आपको गवर्नमेंट की सब्सिडी स्कीम्स वगैरह का फायदा मिलेगा। तो अल्टीमेटली हमें जो भी हमारे क्लाइंट्स हैं उनको फोकस करते हुए ये सेशन मैंने रखा है, क्योंकि अभी का टाइम इतना ज्यादा इस तरीके का हो गया है कि आपको जैसे ही बजट आया आपके पास व्हाट्सएप पे मैसेजेस आने शुरू हो गए होंगे कि ये हमारे बजट के की हाईलाइट पॉइंट्स हैं, इनकम टैक्स में ये बेनिफिट्स हैं, जीएसटी में ये बेनिफिट्स है, कस्टम ड्यूटी में ये कुछ आ गया अमेंडमेंट। तो ब्रॉडली एवरीवन नोज कि क्या क्या बजट में हुआ है। मोटा मोटी अगर हम बात करें इनकम टैक्स में, तो 12 लाख तक का टैक्स पे, 12 लाख तक की इनकम पे कोई टैक्स नहीं है। न्यू रिजीम और ओल्ड रिजीम जो दो अलग अलग सिनेरियोज हैं, वो दोनों हमें थोड़ा बहुत तो नॉलेज है ही, बाकी एक बार हम स्लाइड देखेंगे तो और हमें क्लियर हो जाएगा। टीडीएस रेट्स में इन्होंने काफी चेंज कर दिया, और ओवरऑल अगर मैं बात करूं तो एक नया डायरेक्ट टैक्स बिल ही आने वाला है। तो जो एग्जिस्टिंग इनकम टैक्स एक्ट है 1961, दिस विल बी completely replaced बाय अ न्यू डायरेक्ट टैक्स कोड ऑल टुगेदर, जिसके बारे में काफी समय से बात चल रही थी कि एक नया डायरेक्ट टैक्स कोड आएगा। तो दिस टाइम फाइनली गवर्नमेंट हैज प्रेजेंटेड, अभी कल ही न्यूज में आया भी था कि दिस हैज ऑलरेडी बीन प्रेजेंटेड, और पार्लियामेंट में इसको आगे टेकअप किया जाएगा फॉर अप्रूवल एंड ऑल। तो जो डायरेक्ट टैक्स नया आने वाला है, ठीक है, तो ज्यादा चीजें तो हमें तब पता चलेंगी कि उसमें और क्या चेंजेस हुए हैं। बट जो फाइनेंस मिनिस्टर के इंटरप्रिटेशन से समझ में आया वो ये है कि जो अभी साइज है इनकम टैक्स एक्ट 1961 का, उसका हाफ हो जाएगा। प्रोविजंस कौन से हटेंगे कौन से रहेंगे वो सब हमें बाद में पता चलेगा। द लैंग्वेज विल बी मोर सिंप्लीफाइड,
और उसमें एक जो बहुत ध्यान देने का, उन्होंने अपने स्पीच में भी ये चीज बोली थी कि अब गवर्नमेंट इस तरह से चाह रही है कि वो लोगों पे ट्रस्ट करे, सो दे विल असेस लेटर, ट्रस्ट द पर्सन फर्स्ट। ये उन्होंने कहा कि जो भी रिटर्न्स हम फाइल कर रहे हैं, गवर्नमेंट विल बी ट्रस्टिंग दैट फर्स्ट, एंड देन लेटर ऑन इफ रिक्वायर्ड द असेसमेंट विल बी डन। तो जो पहले सस्पिशियस नेचर होता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का कि नहीं जो प्रेजेंट किया वो गलती होगा या इसमें कुछ हमें कमियां निकालनी है, तो वो मेंटालिटी अब हमें ऐसा जो फाइनेंस मिनिस्टर की स्पीच से समझ में आया वो ये था कि we are trusting more the assessee and we are focusing less on the assessments. So that part will be taken care, जो अब नया डायरेक्ट टैक्स का बिल आएगा उसके अंदर। तो ओवरऑल जो हम बात करेंगे आज के सेशन के अंदर कि क्या क्या हमें अपने क्लाइंट्स को सजेस्ट करना चाहिए, किस सेक्टर में ज्यादा इम्प्रूवमेंट का स्कोप है या कहाँ ज्यादा अभी इन्वेस्टमेंट का स्कोप है। तो कई बार क्लाइंट्स हमसे आके पूछते भी हैं कि कौन से बिजनेस में हमें इन्वेस्ट करना चाहिए, हम करना चाहते हैं लेकिन क्या करें वो समझ में नहीं आ रहा, कहाँ मार्केट हमें ज्यादा मिलेगा। सो फॉर ऑल दैट पर्पस हम कुछ चीजें यहाँ पे समझेंगे कि क्या क्या अल्टीमेटली हमें अपने क्लाइंट्स को गाइड करना चाहिए। तो सबसे पहले हम एक बार बेसिक से शुरू करते हैं। यहाँ पे एग्रीकल्चर सेक्टर में अगर आपके कोई क्लाइंट्स हैं तो हाउ कैन यू गाइड देम। ठीक है, तो सबसे पहले गवर्नमेंट की जो स्कीम है प्राइम मिनिस्टर धन धान्य कृषि योजना, जिसमें ये बताया है उन्होंने कि दे विल आइडेंटिफाई 100 डिस्ट्रिक्ट्स wherein they will develop this kind of agri district program, जिसमें ये धन धान्य कृषि योजना कहा जाएगा। तो वहाँ जैसे वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट वाला जो स्कीम था वो गवर्नमेंट ने काफी टाइम से अभी चलाया भी था, और अब इसी तरीके से हर एक डिस्ट्रिक्ट का एक प्रोडक्ट आइडेंटिफाई कर लिया जाएगा कि कहाँ पे कौन सी चीज अच्छी है। जैसे जयपुर के लिए कहा जाता है कि टमाटोज यहाँ पे ज्यादा होते हैं, तो वो टमाटो केचप और ये सब का जो प्रोडक्शन मैन्युफैक्चर है उस सेक्टर में बहुत ज्यादा सब्सिडी दी जाएगी। सिमिलरली हर डिस्ट्रिक्ट को ये लोग आइडेंटिफाई करेंगे कहाँ पे कौन सी चीज अच्छी मैन्युफैक्चर होती है, तो उस अकॉर्डिंग वहां पे सब्सिडी स्कीम्स दी जाएंगी। तो अगर आपके कोई क्लाइंट्स हैं जो कि एग्री बिजनेस में इन्वॉल्व हैं, so we can guide them accordingly that there will be a lot of subsidies in those particular sector, but we have to keep a track कि कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट्स आइडेंटिफाई हो रहे हैं जिनको स्पेसिफिकली सब्सिडी का बेनिफिट मिलेगा। बिसाइड्स दैट ऑल्सो फूड प्रोसेसिंग डिपार्टमेंट जो है गवर्नमेंट का, जिसे मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग कहा जाता है, तो वहां पर भी बहुत तरह की सब्सिडी स्कीम्स हैं जिसके बारे में भी आप डिस्कस कर सकते हो अपने क्लाइंट्स के साथ जब आप उन्हें गाइड करो। So nowadays the professional's role is not limited to studying the balance sheets and income tax returns and everything. सिर्फ वो ही नहीं है, आप स्टार्टिंग से ही अपने क्लाइंट के साथ एंगेज हो जाइए। एंड बजट का मतलब ही यही है कि आप पूरे साल के लिए उन्हें गाइड कर सकते हैं कि कहाँ किस सेक्टर में बहुत ज्यादा गवर्नमेंट अभी अग्रेसिवली फोकस कर रही है। तो ये चीजें कुछ यहाँ पर है। केसीसी जो गवर्नमेंट ने अभी फाइनेंस मिनिस्टर ने बोला कि केसीसी जो लोन है, हमें पता है या जो भी फार्मर्स हैं वो क्या कर सकते हैं उसके अंदर केसीसी कार्ड के थ्रू they can take loan up to 3 lakhs, but now this limit has been enhanced and now this will be for 5 lakhs, which is a very good initiative। जो शॉर्ट टर्म फंडिंग रिक्वायरमेंट है वो यहाँ से उनका हाथों हाथ पूरा हो जाएगा। देन नेक्स्ट ग्रोइंग सेक्टर जो है वो है कॉटन इंडस्ट्री, जिसको गवर्नमेंट अभी बहुत ज्यादा प्रमोट करने वाली है। तो उन्होंने एक ये मिशन ही रखा है अपना, मिशन फॉर कॉटन प्रोडक्टिविटी। सो दिस विल बी अ 5 year मिशन, जिसमें कि पूरा इस सेक्टर को डेवलप करने के लिए, मॉडर्नाइज करने के लिए, उसमें किस तरीके से और इम्प्रूवमेंट्स हो सकते हैं उसको, उसके ऊपर पूरा फोकस किया जाएगा। तो ऐसे बहुत सारे हमारे क्लाइंट्स होंगे जो कि कॉटन जिनिंग फैक्ट्री है जिनकी, या कॉटन मैन्युफैक्चरिंग या टेक्सटाइल रिलेटेड जो काम है, तो अल्टीमेटली ये सारा बेनिफिट उनको जाने वाला है। तो इस सेक्टर में भी हमें बहुत ज्यादा नियर फ्यूचर में सब्सिडीज वगैरह दिखाई देंगी। फिर नेक्स्ट सीड्स के लिए यहाँ पे है कि नेशनल मिशन ऑन हाई यील्डिंग सीड्स। तो जो भी लोग सीड्स वाला अपना ऑर्गेनिक वाला काम कुछ कर रहे हैं या सीड्स मैन्युफैक्चरिंग, कुछ हाइब्रिड वैरायटी की सीड्स अगर बना रहे हैं, पेस्ट रेजिस्टेंट कुछ काम करते हैं, तो वो सारा भी यहाँ पर इस मिशन में आएगा। देन नेक्स्ट इज इन बिहार दे हैव डेवलप्ड दिस मखाना बोर्ड, क्योंकि आपने सुना होगा ये फॉक्सनट्स या ये जो मखाने होते हैं ये बहुत ज्यादा प्रोडक्शन अभी वहां पे हो रहा है बिहार में। सो जितना भी इंडिया में प्रोडक्शन होता है 90% बिलोंग्स टू बिहार, और बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटी है इसके लिए एक्सपोर्ट करने के लिए। तो गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू एस्टैब्लिश
a complete different sector altogether, a different board to oversee the production process, value addition, marketing, etc. और ये एक अलग ही हब बन जाएगा, थोड़े टाइम में हम देखेंगे इस तरीके से। तो जो भी लोग इस फील्ड में भी इंटरेस्टेड हो, यू कैन ऑलवेज आस्क देम टू टेक केयर ऑफ दिस पर्टिकुलर इंडस्ट्री। देन मिलेट्स के लिए जैसे पिछले साल बजट में काफी कुछ था कि मिलेट प्रोड्यूसिंग जो भी लोग होंगे उनको बेनिफिट दिया जाएगा। तो इस साल गवर्नमेंट ने ये कहा है कि फॉर द नेक्स्ट 4-5 years दे विल बी लॉन्चिंग दिस आत्मनिर्भर भारत इन पल्सेस। तो दालें जो भी मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, तो बहुत सारे ऐसे क्लाइंट्स हमारे होते हैं जो कि पल्सेस बेस्ड अपना फैक्ट्री रन करते हैं। दाल मिल होता है, ग्रेडिंग सॉर्टिंग मशीन्स होती हैं। तो उनके लिए भी आप यहाँ पे उनको फोकस करते हुए बोल सकते हैं कि देयर इज अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज इन द पल्सेस सेक्टर ऑल्सो बिसाइड्स द मिलेट्स। मिलेट्स तो है ही, वो चल ही रहा है। बिसाइड्स दैट इवन गवर्नमेंट विल बी फोकसिंग ऑन pulses ऑल्सो। सो नियर फ्यूचर में वी विल गेट the opportunity to see a lot of subsidies in this particular sector. Then next we have is the next policy which we can take up is regarding this community based herbal जो rural community है उनके लिए भी कुछ वहाँ पे schemes रहेंगी। अब हम MSME के लिए बात करते हैं कि क्या रहेगा। MSME का अगर आपको पता है तो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन में जो चेंज हुआ है उसके बारे में बात करेंगे, which is given here. I think you all can see this definition. एज पर एमएसएमई एक्ट जो है डेफिनेशन वो ये था कि माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम, देर आर 3 कैटेगरीज ऑफ एंटरप्राइज इन दिस एमएसएमई एक्ट जो है। इट दिस डेफिनेशन वाज रिवाइज इन 2020, बट अभी क्या हुआ, इन्होंने वापस रिवाइज कर दिया, बड़ा जल्दी अभी रिविजन हुआ है। द इन्वेस्टमेंट द डेफिनेशन इज बेस्ड ऑन 2 criteria एंड बोथ द क्राइटेरिया शुड बी टेकन टुगेदर। इन्वेस्टमेंट का भी एक पैरामीटर है और एक टर्नओवर का पैरामीटर है। अब आप इसको थोड़ा ध्यान से समझिए किस तरीके से है। करंट जो सिनेरियो है वो ये है कि अगर किसी एंटिटी का इन्वेस्टमेंट यहाँ पे कहते हैं प्लांट एंड मशीनरी में कितना आपने इन्वेस्ट कर रखा है। तो एज ऑन डेट अगर मेरी फैक्ट्री में प्लांट एंड मशीनरी जो लगी हुई है उसका वैल्यूएशन 1 करोड़ या उससे कम है, प्लस मेरा अगर टर्नओवर 5 करोड़ तक का है, अप टू 5 करोड़ अगर मेरा टर्नओवर है, दोनों क्राइटेरिया अगर मीट होते हैं, then I will be considered as a micro enterprise. Now this definition is revised. अभी रिवाइज होके किस तरीके से हो गया वो हम समझते हैं। So what will be the definition of new micro entrepreneurs? So उसमें ये लिखा है अगर आपका इन्वेस्टमेंट 2.5 करोड़ तक का है प्लांट एंड मशीनरी में, अगर आपका इन्वेस्टमेंट 2.5 करोड़ तक का है और अगर आपका टर्नओवर 10 करोड़ तक है, देन यू विल बी कंसिडर्ड एज अ माइक्रो एंटरप्राइज। आप देख रहे हैं जस्ट इन्होंने डबल कर दिया। इन्वेस्टमेंट में तो 2.5 टाइम्स इन्होंने बढ़ा दिया और यहाँ पे टर्नओवर में इन्होंने डबल अमाउंट कर दिया। इससे बेनिफिट क्या होगा वो हम बात करेंगे, पहले हम डेफिनेशन कंप्लीट कर लेते हैं। सो देर आर 3 सेक्टर्स, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम। माइक्रो में आप सिर्फ ये ध्यान रखिए इन्वेस्टमेंट कितना बताया इन्होंने प्लांट एंड मशीनरी में, इट इज 2.5 करोड़ एंड टर्नओवर शुड बी लेस देन और इक्वल टू 10 करोड़। देन इन स्मॉल enterprises, which enterprises will be called small enterprises, where the investment is till 25 crores and the turnover is up to 100 crores. तो ये हमें पता होना चाहिए कि अगर किसी का इन्वेस्टमेंट सपोज 90 करोड़ है और उसका टर्नओवर अगर उसका टर्नओवर 90 करोड़ है और अगर उसका इन्वेस्टमेंट सपोज आता है 24 करोड़, then in that case it will be considered as a small enterprise. The third category is medium enterprise. मीडियम एंटरप्राइज में सिंपल सा बता दिया कि अगर आपका इन्वेस्टमेंट 125 करोड़ तक है, देखिए आप कितना ज्यादा इन्होंने इसको चेंज कर दिया है। पहले सिर्फ था कि 50 करोड़ तक का इन्वेस्टमेंट अगर किया हुआ है तो वो मीडियम कहलाएगा। नाउ दे हैव इंक्रीज्ड इट 2.5 टाइम्स। सो ऑल दोज इंडस्ट्रीज वेयर द इन्वेस्टमेंट इज 125 करोड़ and the turnover is up to 500 crores, they will be treated as medium enterprise. अब मैं आपको बताती हूँ इसका बेनिफिट क्या क्या होगा। बहुत सारी गवर्नमेंट की ऐसी स्कीम्स होती हैं विच आर एप्लीकेबल ओनली ऑन माइक्रो एंड स्मॉल। तो जो माइक्रो एंड स्मॉल पे एप्लीकेबल थी, मीडियम पे नहीं थी, उस केस में वो बेनिफिट नहीं ले पाते थे। या कुछ ऐसे एंटरप्राइज थे जो कि इस डेफिनेशन से बाहर थे, जो इस कैटेगरी में फॉलो नहीं कर रहे, यानी एमएसएमई अगर आप नहीं हो
तो आपको उसका बेनिफिट नहीं मिल पाता था उस गवर्नमेंट की पर्टिकुलर स्कीम का। अब क्योंकि गवर्नमेंट ने ये स्कीम ही चेंज कर, मतलब पूरा डेफिनेशन ही चेंज कर दिया, इस केस में बहुत सारे ऐसे बेनिफिट्स हैं जो पहले नहीं मिलते थे और अब मिलने शुरू हो जाएंगे। एक सिंपल से एग्जांपल मैं आपको देती हूँ। समाधान स्कीम जो है गवर्नमेंट की, तो समाधान स्कीम ओरिजिनली बोला गया था कि ये माइक्रो और स्मॉल को ही अवेलेबल होगी, बट उसमें क्योंकि डेफिनेशन का क्राइटेरिया ये आता था कि आपका स्मॉल एंटरप्राइज का मतलब हुआ जहां पर टर्नओवर 50 CR तक है, वहीं तक वो लोग ही इसका बेनिफिट ले पाते थे। बट अब आप देख रहे हो क्योंकि डेफिनेशन ही रिवाइज हो गई है, सो दिस विल अल्टीमेटली इफेक्ट दैट समाधान स्कीम ऑल्सो। तो अब 100 CR तक जिसका टर्नओवर होगा वो भी समाधान स्कीम का बेनिफिट ले सकता है। सिमिलरली गवर्नमेंट की और भी स्कीम्स हैं, जैसे फूड प्रोसेसिंग के लिए स्कीम होती है, पीएमएफएमई करके एक स्कीम है जिसमें कि 35% का कैपिटल सब्सिडी का बेनिफिट मिलता है। तो वो भी सिर्फ माइक्रो एंटरप्राइजेस के लिए हुआ करती थी। तो माइक्रो की डेफिनेशन जो पहले थी, यानी 5 करोड़ तक का आपका टर्नओवर है तो आप ये बेनिफिट ले सकते थे, इस सब्सिडी स्कीम का बेनिफिट ले सकते थे। बट क्योंकि अब डेफिनेशन ही चेंज हो गई, तो अब ये सिंपल सा हो जाएगा कि जिनका भी 10 करोड़ तक का भी अगर टर्नओवर है, दे कैन ऑल्सो टेक द बेनिफिट ऑफ दैट पर्टिकुलर सब्सिडी स्कीम। सो दिस इज अ वेरी वेलकमिंग स्टेप, बिकॉज आपने स्कोप बढ़ा दिया। एमएसएमई कौन कहलाएंगे इसका स्कोप बढ़ गया अगर, तो जो प्रायोरिटी लेंडिंग सेक्टर है, बैंक भी ज्यादा फोकस करती है अगर एमएसएमई अगर लोन के लिए आते हैं तो if you can say that you are still an MSME, you will get a priority benefit in the lending also. तो ये एक important change है जो गवर्नमेंट ने किया है, which is a very welcoming change। और इसी के साथ एक चीज हम लिंक कर सकते हैं कि अभी गवर्नमेंट ने कहा है उद्यम पोर्टल पे अगर आपने अपना रजिस्ट्रेशन कर रखा है, इट सिंपली मीन्स इफ यू हैव अ उद्यम रजिस्ट्रेशन, if you have an udyam registration, in that case you will be eligible to get a credit card, जो कि वर्किंग कैपिटल के लिए बहुत आसान हो जाएगा। वो मैं पॉइंट लेती हूँ, उसके बाद हम इसको समझते हैं। तो ये जो है क्रेडिट कार्ड्स फॉर माइक्रो एंटरप्राइजेस, अब देखिए यहाँ पे माइक्रो एंटरप्राइजेस लिखा हुआ है क्योंकि ये स्कीम सिर्फ और सिर्फ किसके लिए आई है, माइक्रो एंटरप्राइज के लिए। चालू कब होगी, क्या ऑपरेशनल गाइडलाइंस रहेंगी, वो हमें नहीं पता। बट गवर्नमेंट ये स्कीम लेकर आने वाली है बहुत जल्दी कि जो भी माइक्रो एंटरप्राइज हैं, they will be given a credit card. This credit card will have a limit of 5 lakh rupees, which is a very good amount for your day to day working capital। जो आप सीसी लिमिट वगैरह लेते हैं, जिस कई बार होता है कि मिलता भी नहीं है सीसी बिकॉज ऑफ वेरियस डॉक्यूमेंटेशन इशू एंड एवरीथिंग। तो उस केस के अंदर सिर्फ आपको करना क्या है, यू शुड हैव योर उद्यम कार्ड विथ यू, उद्यम रजिस्ट्रेशन विथ यू, एंड देयर माइट बी सम ऑनलाइन एप्लीकेशन जो आपको फिल करना रहेगा, विच आई प्रिज्यूम, क्योंकि अभी कोई गाइडलाइंस नहीं है। पर क्योंकि गवर्नमेंट कह रही है कि जितने भी लोगों ने रजिस्टर कर रखा होगा उसमें से सिर्फ 10 लाख को अभी शुरू में हम ये कार्ड देंगे। इन द फर्स्ट ईयर ओनली 10 लाख सच कार्ड्स विल बी इशूड, सो whoever will apply first will get the opportunity to get this card। तो हमें अपने क्लाइंट्स को सबसे पहले तो ये बोलना है कि आपको उद्यम रजिस्ट्रेशन लेना चाहिए। First thing is that. So whosoever does not have any Udyam registration, you should first apply the Udyam registration for them. And then whenever the scheme opens up for this particular credit card, then you should apply for that credit card. तो हमें भूलना नहीं है, हमें ये ध्यान रखना है, क्लाइंट्स के लिए थोड़ा सा हमें अग्रेसिवली वर्क करना पड़ेगा इस केस के अंदर। एंड वी शुड गेट देम दिस बेनिफिट जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है एक तरीके से। इट इज जस्ट बेस्ड ऑन द क्राइटेरिया दैट यू शुड हैव योर उद्यम रजिस्ट्रेशन। अभी तक तो ये है, बाकी ऑपरेशनल गाइडलाइंस जो भी आएंगी उसमें हमें और पता चलेगा इसके बारे में। ओके, द नेक्स्ट थिंग इज, क्योंकि जो फीमेल एंटरप्रेन्योर्स है, क्योंकि हमारा आज का सेशन सिर्फ ये नहीं है कि हम पूरा जो बजट है उसमें एक एक पॉइंट को लेके चलें, जो हमारे इंडस्ट्री स्पेसिफिक चीजें हैं हम उस पर ज्यादा फोकस करेंगे। तो फीमेल एंटरप्रेन्योर्स के लिए यहाँ पे क्या है आप समझो। जो भी फीमेल एंटरप्रेन्योर है, अगर अपने घर से काम उसने करना शुरू किया है, तो 5 लाख इज अ वेरी गुड अमाउंट फॉर देम, कि एक मुझे वर्किंग कैपिटल मिल गया काम करने के लिए रेगुलर बेसिस पे। तो जो भी बुटीक चलाते हैं या जो भी जिस तरीके का भी, अब क्योंकि पता है कि उद्यम रजिस्ट्रेशन किस किस को मिल सकता है, जो भी काम कर रहे हो आप, सर्विस सेक्टर में हैं तो भी आपको उद्यम मिल जाएगा, आप ट्रेडिंग में हैं तो भी आपको उद्यम रजिस्ट्रेशन मिल जाएगा, आप मैन्युफैक्चरिंग में हैं तो भी आपको उद्यम रजिस्ट्रेशन मिल जाएगा। एंड माइक्रो की डेफिनेशन हमने देख ली, टिल 10 करोड़ ऑफ द टर्नओवर यू विल बी कंसिडर्ड एज माइक्रो एंटरप्राइज ओनली। तो उसमें अब
जो भी और वो क्राइटेरिया बताएंगे उस अकॉर्डिंग आपको ये एक सिंपल सा चीज, कुछ नहीं करना और आपके पास उद्यम रजिस्ट्रेशन होगा तो आप यहाँ पे क्रेडिट कार्ड का बेनिफिट ले सकते हैं। जैसे किसान क्रेडिट कार्ड होता है उस तरीके से आप यहाँ पे ये क्रेडिट कार्ड आएगा उद्यम रजिस्ट्रेशन के थ्रू, विच इज फॉर माइक्रो एंटरप्राइजेज ओनली। ठीक है। नेक्स्ट हम यहाँ पे बात करते हैं स्कीम फॉर फर्स्ट टाइम एंटरप्रेन्योर्स। अभी फर्स्ट टाइम एंटरप्रेन्योर क्या है, गवर्नमेंट की पहले भी एक स्कीम चल रही थी PMEGP, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम के लिए। तो उसी तरीके से एक और स्कीम अभी गवर्नमेंट यहाँ पे लेकर आई है, बट यहाँ पे इन्होंने स्पेसिफाई कर दिया दिस विल बी फॉर द फर्स्ट टाइम एंटरप्रेन्योर्स, जिसमें कौन कौन होंगे, विमेन, शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स। और ये एक नई तरह की स्कीम होगी जिसमें 2 करोड़ तक का लोन आप ले सकते हो फॉर नेक्स्ट 5 ईयर्स। तो ये चीज इन्होंने मेंशन किया है। वापस इसको समझते हैं। सपोज आई वांट टू स्टार्ट अ न्यू बिजनेस, being a female, I want to start a new business. What are the benefits available for me? So I can apply for this particular scheme. फर्स्ट टाइम एंटरप्रेन्योर के नाम से कोई एक स्कीम आएगी जिसके अंदर हम अप्लाई करेंगे और हमें यहाँ पे इजी लोन फैसिलिटी मिल जाएगी अप टू 2 करोड़। ये यहाँ पे स्कीम के बारे में गवर्नमेंट ने बोला है। हालांकि वी डू नॉट हैव द एग्जैक्ट गाइडलाइंस फॉर दैट, बट स्टिल दिस इज अ वेरी वेलकमिंग स्टेप। क्योंकि अभी जो भी नया बिजनेस सेटअप करना चाहते हैं, द मेन प्रॉब्लम इज फंडिंग, वेयर टू गेट द फंड्स फ्रॉम। So from these things we can get the funds. और being a professional, हमें जब भी बजट पढ़ें तो सिर्फ ये नहीं देखना है कि इनकम टैक्स में क्या छूट मिली है या GST में क्या छूट मिली है, वो तो एक एस्पेक्ट है ही। अभी हमें कोशिश ये भी करनी चाहिए कि हम किस तरीके से बिजनेस को ग्रो करें, क्योंकि अगर बिजनेसमैन ग्रो करेगा तो साइमल्टेनियसली प्रोफेशनल्स भी ग्रो करेंगे। सो दैट इज द होल मोटिव ऑफ लुकिंग एट दिस बिजनेस बजट फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू। Then again, the overall mission of the government is to make the working easy. अब वो कितना कर पाते हैं that is up to them. ये 3 पॉइंट्स बड़े इंपॉर्टेंट है जो हमें ध्यान देने चाहिए। कौन से सेक्टर पे अभी गवर्नमेंट और ज्यादा ध्यान दे रही है, तो एक अगर आप देखोगे यहाँ पे ध्यान से, मेजर फॉर लेबर इंटेंसिव सेक्टर्स, जहाँ पे भी लेबर ज्यादा काम में आ रहे हैं, वहां पे भी गवर्नमेंट अभी फोकस कर रही है इन 3 मेजर सेक्टर्स। फर्स्ट इज फुटवेयर एंड लेदर सेक्टर, second is toy sector, and the third is food processing sector. So all these three will have a boost in this year or in the coming years. यहाँ पे बहुत ज्यादा बेनिफिट देखने को मिलेगा आपको। जैसे ये जो लिखा हुआ है फुटवेयर एंड लेदर सेक्टर्स, इस केस में क्या है, अ स्कीम इज एक्सपेक्टेड टू फैसिलिटेट एम्प्लॉयमेंट फॉर 22 लाख पर्सन्स which will generate a turnover of rupees 4 lakh crores and exports of over 1.1 lakh crore. कितना मटीरियलाइज होता है दैट वी डोंट नो, बट स्टिल द गवर्नमेंट इज फोकसिंग मोर ऑन दिस फुटवेयर इंडस्ट्री एंड द लेदर सेक्टर। तो आपके अगर कोई भी क्लाइंट्स हैं जिनको आपको इस तरह के बिजनेस में डील कर रहे हैं, देन यू शुड गाइड देम दैट यू विल सून हैव अ स्कीम फॉर योर एक्सपेंशन प्लान्स और जो भी आप करना चाहते हैं उसके लिए। टॉय सेक्टर के लिए भी गवर्नमेंट अभी बहुत ज्यादा फोकस्ड है बिकॉज दे वांट अ हाई क्वालिटी, यूनिक, इनोवेटिव एंड सस्टेनेबल टॉय जिसमें मेड इन इंडिया का ब्रांड लगा के आप सेल करें। तो ये गवर्नमेंट का बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, बिकॉज आजकल हम देखते हैं कि जो बच्चे हैं वो सारे टाइम मोबाइल पे या इस तरीके से रहते हैं। तो टॉय इंडस्ट्री को डेवलप करने के लिए जहां भी इनोवेशन हो सकता है उनको एक मोटिवेट कर रहे हैं यहाँ पे, जिससे कि एक्सपोर्ट्स में भी हम आगे आ सके। नेक्स्ट इज सपोर्ट फॉर फूड प्रोसेसिंग। फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के लिए बार बार हर साल कुछ ना कुछ नए नए स्कीम्स आ रही हैं, और अभी तो इन्होंने बिहार में ये एक इंस्टीट्यूट ही नया खोलने के लिए बात कही है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी इन बिहार। सो दिस विल बी डेवलप्ड देयर। ओवरऑल भी अगर आप देखेंगे तो बिहार में बहुत सारे गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव लेने का इस बार प्लान किया है बिकॉज ऑफ एनी रीजन। So, to enhance the income of the local people there, to enhance the skills and ability of those local people there, तो ये चीज वहां पे इंट्रोड्यूस की गई है, एंड द सिमिलर स्कीम्स विल बी इंट्रोड्यूस इन द अदर स्टेट्स एज वेल। एक ये इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको वापस यहाँ पे ध्यान देनी चाहिए, सिग्निफिकेंट एनहांसमेंट ऑफ क्रेडिट अवेलेबिलिटी विद गारंटी कवर। जो हम गारंटी कवर की बात करते हैं, जैसे CGTMSE एक स्कीम होती है जिसमें 2 करोड़ पहले हुआ करता था कि 2 करोड़ तक का आप लोन लेंगे तो उसमें आपको कोलैटरल फ्री लोन मिल जाएगा। लास्ट बजट में उसको बढ़ा के 5 करोड़ तक कर दिया गया था, एंड अगेन दिस हैज बीन रिवाइज्ड फर्दर। लेकिन इंपॉर्टेंट बात, पहले CGTMSE में सिर्फ ये कहा गया था कि जो भी MSME है उनके लिए एक ही कैटेगरी बनाई हुई थी जिनको भी लोन चाहिए। इनफैक्ट वो कैटेगरी भी नहीं थी,
सिंपल जिनको भी लोन चाहिए एंड टिल 5 करोड़ अगर आप लोन लेते हो, देन यू विल हैव अ क्रेडिट गारंटी कवर फॉर दैट. दैट मीन्स यू डू नॉट हैव टू गिव एनी कोलैटरल. तो कोलैटरल फ्री लोन होता था जिसमें कुछ प्रोसेसिंग फीस यहाँ पे कुछ लगती थी, उसके बेसिस पे आपको मिल जाता था इजीली विदाउट एनी कोलैटरल. क्योंकि मेन प्रॉब्लम फंडिंग में ये आती है कि हमारे पास कोलैटरल नहीं है, वी डोंट हैव कोलैटरल बट वी वांट लोन. तो उस केस में गवर्नमेंट ने ये स्कीम निकाली थी CGTMSE. तो उसी के अकॉर्डिंग, उसी में थोड़ा सा करते हुए, एडवांसमेंट करते हुए गवर्नमेंट ने पहले तो कैटेगराइजेशन कर दिया दैट वी विल हैव सेपरेट कैटेगरीज फॉर MSMEs. इनफैक्ट देखिए आप MSE ही लिखा हुआ है, यानी दिस विल बी फॉर माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइज ओनली. देन सेकंड कैटेगरी इन्होंने बनाई है स्टार्टअप्स के लिए, एंड द थर्ड कैटेगरी इज फॉर एक्सपोर्टर्स. ठीक है, जो भी एक्सपोर्टर्स है, MSME यहाँ पे इन्होंने मीडियम को भी इंक्लूड कर लिया है. तो जो भी एक्सपोर्टर्स है उनके लिए भी यहाँ पे स्कीम है. स्कीम क्या है? कोलैटरल फ्री लोन आपको मिलेगा. द लिमिट्स आर गिवन हियर. जो रिवाइज लिमिट है वो यहाँ पे लिखी हुई है, यानी MSE माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइज के लिए गारंटी कवर, गवर्नमेंट की तरफ से जो क्रेडिट गारंटी कवर है, दैट विल बी फॉर 10 करोड़ रुपीज. यानी आप इजीली 10 करोड़ तक का लोन ले सकते हैं विदाउट एनी कोलैटरल if you can showcase that you are a micro or small enterprise. Similarly, for startups, this amount is even higher. It is 20 CR in their case. And for the exporters, if you have that export license and all, then you can showcase that you are an exporter and you belong to this particular category of MSME, and then you can take a benefit of loan which is up to 20 CR. So this will be term loan. फर्स्ट ऑफ ऑल ये वर्किंग कैपिटल नहीं है, ये आपको टर्म लोन के पॉइंट ऑफ व्यू से मिलेगा, एंड दिस इज कोलैटरल फ्री लोन. तो जो भी गाइडलाइंस है वो सभी चीज की बाद में आएगी, बट द थिंग इज एक वेलकमिंग स्टेप है जो गवर्नमेंट का यहाँ पर है. देन सिंपल जो और आम आदमी के लिए जो गवर्नमेंट ने स्कीम्स निकाली है, उसके अंदर सक्षम आंगनवाड़ी एंड पोषण योजना है. तो फॉर द वेलफेयर ऑफ फीमेल, जो भी हमारे गांव में महिलाएं हैं उन सबके लिए. देन रूरल सेक्टर में जो भी है. देन एक्सपेंशन ऑफ IITs, ये भी एक बहुत बढ़िया स्टेप है क्योंकि एजुकेशन में बहुत ज्यादा गवर्नमेंट अभी फोकस कर रही है. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी अगर आपने देखा हो तो गवर्नमेंट ने एक अलग ही सेटअप, नेशनल सेंटर ऑफ एक्सेलेंस बनाने की बात कही है, जिसमें 500 करोड़ दे विल बी इन्वेस्टिंग इन सेटिंग अप एन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेंटर ऑफ एक्सेलेंस, जो कि हमें बहुत ज्यादा आगे हेल्प प्रोवाइड करने वाला है. Then they have daycare cancer centers in all district. This is something which it's okay. I mean, from the point of view of professionals, it may not attract you that much, but yes, these are the schemes which the government is introducing. Then भारतीय भाषा पुस्तक स्कीम. तो अगर आपके कोई भी क्लाइंट्स हैं जो कि बुक्स का बिजनेस करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग या पब्लिशिंग हाउस है अगर कोई, then in that case you can always ask them to take benefit under these particular schemes, जहाँ पे ये इस तरीके के गवर्नमेंट की स्कीम्स में भी अपना रजिस्टर करके and they can take benefit out of it. Then there will be national centers, there will be 5 national centers of excellence for skilling, जिसमें ग्लोबल एक्सपर्टीज दी जाएगी. सो ग्लोबल फ्रॉम द वर्ल्ड, फ्रॉम द ग्लोबल लेवल, आई मीन. So government will be will enter into partnership with them, and then they will provide skills and learning methodology to the students. Then this अटल टिंकरिंग लैब, ये तो स्कूल्स में आजकल बहुत ज्यादा अच्छा सेटअप टेक्नोलॉजी वाइज गवर्नमेंट कर रही है एंड करते रहेगी, वो चीज के लिए बताया है. दिस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, दिस वी हैव ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट. देन ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी. देखिए गवर्नमेंट तो कोशिश कर रही है कि ब्रॉडबैंड इंक्रीज हो, बहुत जगह कर भी दिया है, एंड इट इज a growing sector altogether. In one way we cannot have it, but again the government is focusing more on internet and the broadband connectivity, so that सिर्फ बुकिश नॉलेज हमारे पास नहीं रहे, जो भी हमारे स्टूडेंट्स हैं उनको ओवरऑल एक डेवलपमेंट मिल सकता है सारे सेक्टर्स का ग्लोबली. एक ही जगह बैठे बैठे आप सर्च करिए और अपना खुद ही रिसर्च करिए सब चीजें, और आपको सारी चीज एक जगह मिल जाए. तो गवर्नमेंट इज प्लानिंग फॉर दैट इवन इन द रूरल एरियाज. Then expansion of medical education, where 10,000 additional seats with goal of adding 75,000 seats in the next 5 years. तो ये एक मेडिकल एजुकेशन में भी बहुत ज्यादा है. तो अगर कोई इंस्टीट्यूट अपना बनाना चाहता है मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए,
then in that case again you can ask them कि इस तरह से आप यहाँ पे जा सकते हैं, because there is a future. The sitting capacity, the seats have been increased. तो जो कोचिंग सेंटर्स हैं इस चीज के लिए, उनको आप गाइड कर सकते हो कि फ्यूचर में बहुत ज्यादा इसका स्कोप है, एंड देयर बाय यू कैन गाइड देम. देन पीएम स्वनिधि योजना, इसमें एडिशनल क्या है वो बता देते हैं. पहले ये स्वनिधि योजना है किसके लिए? जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं उनके लिए ऑप्शन था कि दे विल बी गेटिंग 10,000 और 20,000 फ्रॉम द गवर्नमेंट एज अ ग्रांट. तो ये उनको मिल सकता था. अभी यहाँ पे और इसको एनहांस कर दिया है इस स्कीम को. नाउ दे विल हैव अ यूपीआई लिंक्ड क्रेडिट कार्ड्स. तो और भी बेटर हो गया. अब जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं दे कैन हैव देयर ओन फंड्स विद द हेल्प ऑफ दीज क्रेडिट कार्ड्स. देन ये एक आप बहुत अच्छा चीज अपने जो भी क्लाइंट्स हैं उनको बता सकते हैं, वेलफेयर ऑफ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म वर्कर्स. तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म वर्कर्स यहाँ पे हम ऐसे समझते हैं जो गिग वर्कर्स हैं, दोज हु आर नॉट एनरोल्ड विद दी एनरोल्ड विद एनी एम्प्लॉयर. उस केस में उनको वो ग्रेजुटी का, पीएफ का, पेंशन का ये बेनिफिट्स नहीं मिल पाते हैं. तो उसके ईपीएफ के ये बेनिफिट्स नहीं मिल पाते हैं. तो उसके लिए गवर्नमेंट क्या कर रही है? गवर्नमेंट ने अभी ये जो स्कीम है, they want them to enroll for e-shram portal. There is a separate portal altogether, e-shram portal, wherein these laborers, these workers can register themselves and then they can have the benefit of PM Jan Arogya Yojana. तो हेल्थ के जो भी बेनिफिट्स है, इंश्योरेंस वगैरह के, वो उन्हें मिल जाएंगे. तो हमें कुछ नहीं करना, हमारी कोई कॉस्ट भी नहीं लग रही एक तरीके से. जब आप क्लाइंट्स को भी ऐसा सजेशन दे सकते हैं कि उनके पास अगर कुछ वर्कर्स हैं जो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे हैं मे बी, तो वहां पर वो इस तरीके से इसको प्लान कर सकते हैं दैट दे विल आल्सो हैव द बेनिफिट. और कई जगह सीएसआर बेनिफिट्स भी दिए जाते हैं. इन दैट केस दिस कैन आल्सो बी अलाइंड विद दैट. देन नेक्स्ट इज, और हमारे पास क्या क्या योजना है. ये पावर सेक्टर में भी गवर्नमेंट बहुत सारे रिफॉर्म्स लेकर आने वाली है, जो नॉर्मली आप देख ही सकते हो. एक इसमें इम्पोर्टेंट चेंज जो गवर्नमेंट ने किया है, न्यूक्लियर एनर्जी में गवर्नमेंट ने पार्टनरशिप करने के लिए सोचा है प्राइवेट सेक्टर के साथ, विच इज अ वेरी वेलकमिंग स्टेप, जो कि गवर्नमेंट बहुत तेजी से अभी करने वाली है. हम इसमें थोड़ा सा एक बार आगे चल लेते हैं, ये वाला चीज को थोड़ा सा छोड़ते हुए. नेक्स्ट अभी यहाँ पे हम आते हैं, ये रहा न्यूक्लियर मिशन वाला जो पॉइंट है तुम्हारा. न्यूक्लियर एनर्जी मिशन फॉर विकसित भारत, अमेंडमेंट्स टू द एटॉमिक एनर्जी एक्ट एंड सिविल लाइबिलिटी फॉर न्यूक्लियर डैमेज एक्ट विल बी टेकन अप फॉर एक्टिव पार्टनरशिप विद द प्राइवेट सेक्टर. नॉर्मली न्यूक्लियर एनर्जी वगैरह जो सेक्टर है विच इज वेरी रिस्ट्रिक्टेड सेक्टर, ये गवर्नमेंट ने ओपन अप कर दिया प्राइवेट पार्टनरशिप के साथ. तो दिस इज अ वेरी, अगेन जो भी बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट करने में इंटरेस्टेड हैं इस सेक्टर में, आप उन्हें गाइड कर सकते हैं कि यू कैन एंटर इनटू पार्टनरशिप विद द गवर्नमेंट. Then again, one more scheme with the government is bringing into is Udan, regional connectivity to 120 new destinations and carry 4 crore passengers in the next 10 years. तो एयरलाइन इंडस्ट्री में भी ऑल टुगेदर गवर्नमेंट पूरा अपना नया वेंचर इस तरीके से करने वाली है, जो कि उड़ान स्कीम के तहत ये आएगा. देन नेक्स्ट यहाँ पे हम देख सकते हैं, और हमारे पास बहुत सारी स्कीम्स भी हैं गवर्नमेंट की. एक ये वाला टूरिज्म सेक्टर में, अगर आपके कुछ क्लाइंट्स हैं जो कि टूरिज्म सेक्टर में हैं, जो नो डाउट होंगे आपके पास कई सारे, तो हाउ कैन यू गाइड देम? सो दिस इज द थिंग विच यू कैन से, tourism for employment led growth. ये इस तरीके से यहाँ पे लिखा है. So 50 tourist destinations will be identified and they will be developed with public private partnership kind of thing. उस केस में वहां पे ई वीजा फैसिलिटीज भी स्ट्रीमलाइन कर दी जाएगी. स्किल डेवलपमेंट सेंटर्स भी बनाए जाएंगे सो दैट जो यूथ है वहां का वो बाहर ना जाए और वहीं की वहीं पे ही अपना उसको एम्प्लॉयमेंट मिल जाए. देन देयर विल बी परफॉर्मेंस लिंक्ड इंसेंटिव्स ऑल्सो. किस तरह से वो स्टेट उसको डेवलप कर रहा है, वो डिस्ट्रिक्ट उसको डेवलप कर रही है डेस्टिनेशंस को, तो वहां पे परफॉर्मेंस लिंक इंसेंटिव्स भी उनको दिए जाएंगे. देन अगेन मुद्रा लोन्स विल बी गिवन फॉर द होम स्टेज, ease of travel and connectivity to tourist destination, that all will be taken care. See, मैप में तो गवर्नमेंट ने अपने पूरे बजट में तो ये सब चीजें दिखाई हैं. प्रैक्टिकली कैसे होगा हमें नहीं पता, बट एटलीस्ट वी कैन गाइड आवर क्लाइंट्स whosoever is engaged in this tourism industry. आप उनको गाइड कर सकते हैं कि गवर्नमेंट nowadays is more eager with increasing this tourism sector. तो आप गवर्नमेंट के साथ जो भी स्कीम्स आती हैं उसमें टाई अप कर सकते हो और वहां पे आप इजीली वहां पे बेनिफिट ले सकते हो.
Next is regarding this program of PM Research Fellowship. Government is nowadays in this budget itself, you can see this point I want to highlight first. For research and development and innovation, these are the three key words now. It's not only research and development, nowadays it is research, development, and innovation also. So, for this particularly, government has allocated 20,000 crores uh, for this particular thing. They have allocated a separate fund. Every time government in their budget, they talk about this research and development, but there is no separate allocation of funds for this particular thing. So this is the huge amount which is kept aside for the research, development and innovation sector altogether. So सारे startups वगैरह जो भी हैं, जो भी कुछ research करते हैं, they can take benefit of this particular thing, and they can utilize that and attain their goal. Then again फेलोशिप प्रोग्राम्स भी कंडक्ट करेंगे गवर्नमेंट यहाँ पे, जो आईआईटी और आईआईएससीज के साथ किए जाएंगे. देन अगेन जीन बैंक फॉर क्रॉप्स, जर्म प्लाज्म. जैसे गवर्नमेंट का एक सेटअप था पूरा एआईएफ, एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के लिए, जिसमें कि आप 2 करोड़ तक का लोन ले सकते हैं, इंटरेस्ट सबवेंशन मिल जाता था 3% तक का. सेम बेस एक सेपरेट ऑल टुगेदर फंड ऑफ फंड बोल के अलग से एक और पूरा नया फंड क्रिएट किया जा रहा है. सो गवर्नमेंट इज ईगरली फोकसिंग ऑन दिस फूड इंडस्ट्री अगेन एंड अगेन. न्यूट्रिशन बेस्ड जो भी वर्क है उसको गवर्नमेंट यहाँ पे प्रमोट कर रही है. देन नेक्स्ट इज ज्ञान भारतम मिशन, भारतम मिशन. इसमें क्या है, डॉक्यूमेंटेशन एंड कंजर्वेशन ऑफ आवर मैन्यूस्क्रिप्ट हेरिटेज to cover more than 1 crore manuscripts, National Digital Repository of Indian Knowledge System for knowledge sharing to be set up. अब ये देख रहे हो इस तरह का गवर्नमेंट क्रिएट करिए. जैसे पहले म्यूजियम्स ही होते थे सिर्फ, अब इसको डिजिटल लाइब्रेरी एक तरीके से बना दिया जाएगा. जितने भी हमारे मैन्यूस्क्रिप्ट्स हैं, दे विल बी कन्वर्टेड इनटू दिस. सो जो भी लोग इंटरेस्टेड हैं इस तरह के काम में भी, आप उनको भी आइडियाज दे सकते हैं, सो दैट दे कैन ऑल्सो एंटर इनटू दिस काइंड ऑफ थिंग. Then this National Geospatial Mission. So last year भी जब बजट आया था तो गवर्नमेंट ने कहा था कि जो भी लैंड है उन सारे रिकॉर्ड्स को, जितने भी जिसके नाम से जो भी लैंड है, a separate repository will be made wherein all the records of land will be digitalized. सेम वेज उसी को आगे बढ़ाते हुए यहाँ पे गवर्नमेंट ने ये नेशनल जियो स्पेशल मिशन किया है, जिसमें सारे लैंड के रिकॉर्ड्स, अर्बन प्लानिंग, डिजाइन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, दैट विल बी टेकन केयर. Now, the next sector which the government is focusing upon is promoting exports. Exports में आपके जो भी clients हैं, आप उन्हें ये बता सकते हो, government is very, very, very eager to promote export. So they have launched this export promotion mission altogether with sectoral and ministerial targets to facilitate easy access to export credit, cross-border factoring support, and support to MSMEs to tackle non-tariff measures in overseas market. तो अल्टीमेटली एक्सपोर्टर्स को बेनिफिट देने के लिए ये पूरी स्कीम यहाँ पे लॉन्च की है. अगेन वी डोंट हैव द ऑपरेशनल गाइडलाइंस फॉर दैट, बट ऑब्वियसली दिस विल बिकम much more simplified in the case of exporters. Then again there is one more scheme, that is Bharat Trade Net, a digital public infrastructure. Bharat Trade Net, which is BTNN for short, for international trade, will be set up as a unified platform for trade documentation and financing solution, support for integration with global supply chains. So जो भी आप एक्सपोर्ट करते हैं, इंपोर्ट करते हैं, उसका एक अलग ही प्लेटफॉर्म ऑल टुगेदर बना दिया जाएगा, जिसमें आप फाइनेंसिंग का भी बेनिफिट ले सकते हो, डॉक्यूमेंटेशन का भी पूरा आपको वहीं पे सारा एक ही जगह चैनलाइज कर दी जाएगी चीजें, एंड दैट विल बी नोन एज भारत ट्रेड नेट. The next is National Framework for GCC. What is this GCC? As a guidance to state for promoting global capacity centers in emerging tier 2 cities. So tier 2 cities में specifically government is focusing on this global capability centers. So ये एक नया concept है जो कि अब आने वाला है future में. Then again warehousing facility for air cargo. So this is also something which you can guide your clients, whoever has the warehouses, they can collaborate and they can have it for the air cargos as well. Then next is in financial sector. This is again very important if you can read the points here. First is Grameen Credit Score.
what is this Grameen credit score? The self-help groups in the rural areas, they normally have problems while taking funds from the banks, or they are it's very difficult for them to arrange funds. So because they don't have a good CIBIL score or something like that. So now a new concept of Grameen credit score will be developed so that they can easily have the funds. So this is a new concept altogether. Then we have N NAB, FID. So what is it? It is a partial credit enhancement facility for corporate bonds for infrastructure. Again, the guidelines are not there, so there is nothing much to discuss in this particular thing. Then there will be a revamp in the KYC sector, KYC category. They will have a altogether new KYC registry. Then rationalization of requirements and procedures for speedy approval of company mergers, because government is again saying that we will provide you ease of doing business. So if you want to close down one business, if you want to take over another business, you want to acquire something new, or if you want to have mergers and acquisition, the things will be simplified for you. So this is something which the government is thinking of. The roadmap is not very clear, but still the government is thinking for this. Then again, a big thing here is in the insurance sector, the FDI limit has been increased from 74% to 100%. So there will be a lot of competition. There will be a lot of work for us also being a professional. कौन से इंश्योरेंस अच्छा है कौन सा बुरा है, आप जब अपने क्लाइंट्स को कंपेयर करके बताएं कहाँ पे उसे जाना चाहिए, प्लस देयर विल बी अ लॉट ऑफ ड्यू डिलिजेंस वर्क फॉर दिस insurance sector. So that will again a good opportunity for all of us. Then this tax reform we have already talked about, that a new income tax bill which has already been introduced yesterday, that will soon come in the coming weeks. We will have the whole scenario, what will be the changes in that. Then again, we have high level so this is again a good concept to monitor the states. Normally what happens is central government, they give funds to the state government for the all the development planning and subsidy schemes and all, but it happens that the fund is not transferred, or it is not channelized in a proper manner. So they are in a phase to develop a index to judge which state could materialize all the things which were told in the budget. So it will be a kind of parameter to judge which state could actually perform better. So this kind of thing, which I don't know how practical it is, but still the government will be taking this up in the near future. Then again, we have this Jan Vishwas Bill 2.0, which says that they will decriminalize more than 100 provisions in various laws. So last year also in the budget, we saw that there were many provisions which were decriminalized. So wherever there was a provision in, in, in various acts, there were provisions for the criminal laws guidelines were there. So in that case, they will be decriminalized. So only the monetary penalty could be levied, and you will not be considered as a criminal. It will not be considered as a criminal offense. So some more addition to that thing will happen in this according to this budget also. So this is the thing. Then in indirect tax, we already know that on many goods, according to the finance minister, around 7 tariff rates have been removed, and then it applies not more than one cess or surcharge. So in most of the categories, it will be like now only one cess or surcharge will be applicable. So double taxation would be avoided. That is what they mean here. Then they will apply equivalent cess to maintain effective duty incidence on most items and lower cess on certain items. So again, all that is proposed in the Customs Act. Then sector specific proposal, which we know that in the case of Make in India concept, then they will exemption to open sell for LED, LCD TV, looms for textiles, capital goods for lithium ion batteries, or mobile phones and EVs. So if they are made in India, they will have a specific benefit. Then promotion of MRO, exemption for 10 years on goods for shipbuilding and ships for breaking, extension of time limit for export of railways,
goods imported for repairs. So all this will be done. Then again, for export promotion, what the government is benefiting, as we recently studied in the above slides, that there will be more benefits for the leather sector, footwear and leathers, and again for handicrafts also. So duty-free inputs for handicraft and leather sector will be given. So this is how they are trying to promote this exports. Then for trade facilitation, time limit is fixed for finalization of provisional assessment. New provision for voluntary declaration of material facts post clearance and duty payment with interest but without penalty. So this will be something new which will happen. So to facilitate the trade, the time limit which is fixed for the finalization of the provisional assessment, which was not there earlier, they will now be fixing up a time limit within which you can, the assessment can be completed for that particular thing. So the time limit is mentioned here. Then again, for the medicines also, they have mentioned that there will be 36 life-saving drugs or medicines which will be included in that exempted list, and on some medicines the duties will reduce and so on. That will also be there. Then next is direct tax proposal, which we already know that this is now the new slab, and this is by default. So already we know that there are two regimes going on, old regime and new regime. So by default, this new regime is applicable on us. But if you want to go for the old regime, you can still choose the old regime and then you can file your return accordingly. So what is the change in the new regime? First thing is you can see the income range which they have mentioned is now the slab is increasing with a range of 4 lakhs. So after every 4 lakh, the rate of income tax is changing. So till the first 4 lakh, the income tax rate is nil. For the next 4 lakhs, that means from 4 lakh to 8 lakh, the income tax rate will be 5%, then 10%, then 15%, then 20%. And this 25% category has been introduced newly. So for if your income is between the range of 20 lakh to 24 lakh, then your income tax will be it will be taxed at 25%. Then more than 24 lakh, it will be taxed at 30%. So this is how it will go. And as we all know, there is a 87A rebate available only on the normal income. It is not available on the capital gains and other things. So again, that benefit will be given to us, and that is how we are assuming that there will be a lot of tax benefit this time. Then there is one more thing here. Uh, Introduction of a scheme for determining arm's length price of international transaction for a block period of 3 years. So, like in international transactions, normally the arm's length price used to be determined for 1 year only. Again and again, they had to apply for determining the arm's length price for each and every year. But now they are saying that for a period of 3 years, in a block a period of 3 years, the same rate will be used again and again. So that is a welcoming step, which we can say. So some procedural hurdle is reduced there. Then this in TDS and TCS also, we understand that there is a huge benefit available for the senior citizen. It is saying that the tax deduction limit for senior citizens has doubled from 50,000 to 1 lakh. So for them, it is a very great benefit. And for the rent also, the annual limit, which was earlier fixed for 2.4 lakh for the TDS, now it has been increased to 6 lakh. So this is again, so there are changes in the TDS and TCS also. For something where TDS is already charged, again TCS is not applicable for the supply of goods. So that is also one of the things which we should know. Then this updated returns. So ITRU was introduced 2 years back. So now what it was earlier allowed for 2 years. So once the time period of filing belated return is over, now suppose you want to file your return. So in that case, it is known as updated return. So updated return here, it is saying that what is the time limit? The original time limit which was mentioned in the previous budgets was for next 2 years. So the current limit was 2 years. Suppose you have not filed your return till 2022. So till 2024, you could file your returns.
but now it has increased up to 4 years. So for this particular thing, we will see, because here they are saying that uh, no refunds will be given to you if you are filing ITRU, obviously. No refunds will be given to you. You have to pay some tax and then you can file the return. So that is again important to see, because till if it was for 2 years only, it was mentioned that if you file it within 1 year, then 25% of the tax you have to pay. Then again, if you file in the next year, then 50% was the amount which you had to pay. Now, what is the amount which has increased for the third year and fourth year? So that is something which we need to see, and we will see that in the coming slide. Then there is some reduction in the compliance burden of the trust, small charitable trust and institutions. So normally what is happening is they have to apply for, once they apply for the registration, that is valid for 5 years. Again, they have to get the renewal for that. So now they are saying that if you are a small charitable trust. So first of all, let us understand what is a small charitable trust, because there will be a separate definition who is considered a small charitable trust. So it is based on their annual receipts. So if the annual receipts is lesser than a particular limit, then they will be considered as a small charitable trust. And in that case, whatever registration which they have got, that will be extended for 10 years. They don't have to get the renewal of that particular thing. So taxpayers to be allowed to claim the annual value. Again, this is a new thing for the residential property income. Earlier, there was some condition. If you have two houses, then one of your house SOP, self-occupied property, will be taken on the notional value. So now they are saying that the conditions which were attached, they are gone. So what are the conditions and on that we will see. And now you can claim for two house properties if you have. You don't have to get that will be given without taking any income tax on that. Then employment and investment, in that case particularly, there will be some tax benefits for electronic manufacturing persons, whosoever is engaged here. For the NRIs, it is a welcoming step if they are engaged in this kind of things. Then there's something very welcoming for the startups. So if you understand what is a startup, whosoever gets registered into DPIIT, they will be considered as a startup. So broadly, if you start manufacturing your product, if you have any unique idea and you get yourself registered as a startup, then you might have the benefit of taking the tax exemption also. Out of the first 10 years, for any 3 years, you will get tax exemption. That is the concept of startup, wherein there is a separate section, 80 IAC, which says that you will have a tax exemption if you are a startup. So broadly, who will be considered as a startup, or who will get this benefit of tax exemption? Earlier it was mentioned that the production or their incorporation should have been done till 2025, 31st March 2025. Now they have increased the uh, time limit for that. They are saying that if you are registered till 2030 also, then also you will get the benefit. So this is something which you should always guide your client. Firstly, if they are not recognized as a startup, make them help them in recognizing themselves as a startup. And then once they are considered as a startup, they can avail the benefit of the tax exemption which is available to them. Okay. Then going further. So this is just a presentation where the government thinks that they will have their money coming from. So as the finance minister mentioned that they are already giving so much benefit to the general public that they are not charging any income tax up to 12 lakh. So she mentioned that they will be foregoing this amount of 1 lakh crore rupees per annum. So still they are assuming that they will have 22% of their revenue generation from the income tax. This is what they are saying in this particular chart. So the from where the revenue receipts are coming to the government. So it is basically from the borrowings and other liabilities. So this is the capital receipt. So here we can see both the revenue and the capital receipt. So
from borrowings, the government is having 24% kind of amount. Then out of the total non-tax receipts could be ranging from 9 to 10%. Then customs, from custom duty also they will have around 4% revenue. Then from corporate taxation, there will be 17% of revenue generation. From GST and other taxes, 18% of the whole income of the government will be uh, uh, constituted with that. Then union excise duties, 5% around the amount they will be having it from there. Then what is the allocation? So the capital expenditure and the revenue expenditure, it will be summarized in this way, that 4% of the total share will be given as pensions, then other expenditures is 8%, then the schemes which the government is offering will amount to 8%, around 8% will be given as finance, commission and other transfers, etc. Then to states, they will be giving 22%. Then major subsidies which they are talking about, that will have a component of share of 6%. Then defense sector will have 8%. Then central sector schemes, which is excluding the capital outlay on defense and subsidy, will amount to 16%. Though that as a layman, this may not be of very much interest to all, but being a professional, you should understand from where the government is collecting money and where this whole money is being allocated and what is the proportion. So this is how they present, and this is all presented by them. And they have again mentioned that what was, see, if you can see these graphs or these charts, here they are specifically mentioning that the revenue expenditure will increase this year, and the capital expenditure, though they are saying that it will be a bit lower uh, from as compared to the last year, but still we can see because there is always uncertainty with respect to that. Then again, the expenditure, if we talk about the effective expenditures, again, they have given the graphs. Then the deficit trend, which the government is saying, there are different kinds of deficit which we can stay here. Fiscal deficit, revenue deficit, effective revenue deficit, then the primary deficit. So in all these things, if you can see that in for the year 25-26, this is the purple graph for that, you can see that the deficit is reducing. The deficit is reducing. That is what the government presumes that it will reduce. Okay. So this is the whole thing. So ultimately, sector-wise also, the government has allocated the fund. For defense sector, it has allocated. So all this is in crores. 491 crores amount they have allocated to defense sector. For rural development, they have allocated 266 crores amount and so on. So here, if we see all these sectors for commerce and industry, they have allocated 65,553 crore amount. And then for scientific departments, again, 55, 679 crores they have allocated. So all this is dealt here. Then let us move quickly to the income tax changes which have happened. Meanwhile, if you have any question, we can take that also. If you have any questions, please let me know. Otherwise, I'll be just sharing my screen. Just a second. Let me know my screen is visible or not. Yes, ma'am, visible. Just make it to full screen, ma'am. Yeah, I'm doing that. So basically, this is the income tax slab change which we should know. This is how it looks like till financial year 24-25. This was the criteria. Up to 3 lakh, there will be no tax and so on. And now the change is up to 4 lakh, you will not have any tax. Then this is the new regime which we are talking about, and this is the change in the slab rates. So this we have already discussed. Basically, it is saying that the rebate to resident individuals under Section 87A of 100% of tax payable to total income up to rupees 12 lakh or 60,000, whichever is lower. So they have specifically mentioned 60,000 will be the higher limit. Then
Thus, up to 12 lakh of income, no tax is payable. The benefit is available only for new regime of taxation. Also, memorandum clarifies that above 87A relief is not available to income chargeable at special rates, that is capital gains under section 111A, 112, 112A, etc. So again, this 87A, last year there was so much doubt whether it will be given on this capital gain or not. But now they have very well clarified that no 87A benefit will be given to this special rates income. And this rebate is available only for the new regime. Then again, there will be no deduction except these deductions in the old in this new regime. So in new regime, you will have a deduction for the salaried people. There will be a deduction of standard deduction. This is allowed. I mean, till 75,000 of standard deduction is allowed for them. Then family pension scheme, family pension income, sorry, under section 57. A of a sum equal to 33%, 33% of such income or 25,000, whichever is less. This shall also be given as a deduction. Then any deduction of amount paid or deposited to Agniveer Corpus Fund. This will also be given as a deduction. Then employer's contribution to NPS. So again, this is very important. Normally, this will be given, this last point, the contribution to NPS will be given only to the salaried people. If you are yourself contributing to the NPS scheme, that will not be given as a deduction to you. So the important point to note here is by default, new regime will be applicable to you. If you want to go for old regime, then you have to select that option and then you can proceed. So this here also both the options are available. You can opt for new as well as the old one. So for the professionals again, there will be you have to present it to the clients that this is the income saved if you go for old scheme or the new scheme. So again, a comparison has to be made and presented to the clients. So that is again a task for all of us. This you can take up. Then moving further, I think this is visible. Amendment in the definition of perquisites. So for perquisites, what was the existing provision? It said that it was contained in section 17.2. It provided that perquisite includes the value of any benefit or amenity granted or provided free of cost or at concessional rate by the employer to an employee whose income under the head salaries as a monetary benefit does not exceed 50,000. So that is something which we already know. But what further, if we read here, is there was a proviso to section 17.2 which provides that any expenditure incurred by the employer for travel outside India or the medical treatment of an employee or member of the employee family shall not be included in perquisites, subject to the condition that the gross total income of such employee does not exceed to rupees 2 lakhs. So now the proposed amendment is like the upper limit for the words which were mentioned earlier, that such amount as may be prescribed will be changed. This will be substituted now. So the upper limit of 2 lakh will be changed now. It will be taken like such amount as may be prescribed. So in rules, we will have a different amount then. So that the power to prescribe rules may be obtained to increase the limit on the gross total income of the employee so that the amenities and benefits received by such employee would be exempt from being treated as perquisites. And the the expenditure incurred by the employer for travel outside India on the medical treatment of such employee or his family member would not be treated as a perquisite. So this way, I mean, the rules will come up for this particular thing for the establishment of what is treated as a perquisite or what will not be treated as a perquisite. Then next is 80CCD. It is basically for NPS Vatsalya scheme. So if you have contributed something to that, that will also be given as a deduction. This is something which is an added on thing which is mentioned here. So a new clause is inserted here. The new clause is 12BA, which is mentioned in section 10. Any income received on partial withdrawal made out of the minor's account shall not be included in the total income of the parent or guardian to the extent it does not exceed 25% of the amount of contributions made by him and in accordance with the terms and conditions specified under the Pension Fund Regulatory and Development Authority 2013.
So basically earlier this was not considered, but now they have considered this NPS Vatsalya account. A deduction will be given under this particular section 80 CCD 1B. Then again, if you are withdrawing from this amount, then till 25% it will not be taxed, but beyond that it will be taxed. So next amendment is in case of ATIAC. This is for the startups, which we already discussed earlier. That earlier this definition included the ATIAC benefits were given to startups if it was incorporated on or after 1/4/2016, but before 1/4/2025. So that was the limit which was mentioned. If any startup has incorporated before this date, 2025, 1/4/2025, then they were eligible to have the benefit of tax exemption for 3 years. Now again, this limit of this 2025, the year 2025 has been extended to 2030. So next 5 years also, if any startup is incorporated, or if any MSME which is incorporated and it has registered as a startup, then they can avail the benefits of tax exemption. So this is a very good area where you people can focus and you can get your clients registered as a startup. Then again, there's an amendment in the crypto asset definition. First of all, this the definition has been introduced for the crypto asset, what will be regarded as a crypto asset. And then just like we have AIS, wherein the shares purchase and sale details are available. Now there is a mandatory obligation on the service providers for this, whosoever is dealing in the crypto thing, they are mandatorily supposed to furnish the information to the income tax authorities that these are the purchase and sale of any person who is registered there, so that the government will have they have the proper records, whosoever is dealing in the crypto also. So this will also be reflected in your AIS soon. Next is capping on the carry forward and loss pursuant to amalgamation. So earlier there was a doubt when companies were amalgamating regarding the carry forward of the losses. So whether for how long this carry forward of losses will be available to the entity which is amalgamating. So now finally it is mentioned that total of 8 years will be given. If they have already availed 3 years benefit and now they are amalgamating into some other entity, then the balance of 5 years only will be available for them. So that is how it is mentioned there, that the carry forward and set off of accumulated losses and unabsorbed depreciation allowance in the scheme of amalgamation will be provided for a maximum of 8 years ultimately. Fine. So then again, this ITRU, which we were talking about, the updated return. So here you can see that if the return is filed within 12 months, then 25% of the aggregate of tax and interest will be levied. If you are filing in the second year, then 50% of the aggregate tax and interest will be levied. Now coming for the third and fourth year, because now the updated return is allowed for 4 years. So if you are filing in the third year, then 60% of the aggregate of tax and interest will be levied. And if you are filing in the fourth year, then 70% of the aggregate of tax and interest will be levied. So normally it happens that when you are applying for loans and all, then they ask you for the income tax returns. Suppose if any of your client does not have that income tax return of of the previous years, then you can easily file this ITRU. Whatever amount is required to be paid as tax and interest, then you have to pay that, and you will have proper records of your returns, and then you can apply for the loans and everything. I think we can stop here. The time is already over. If we have any questions, we are open to discuss that. Thank you, ma'am, for your presentation and explaining topic in simplifying way. So now I request all the participants and delegates, if you have any question, you can unmute yourself and ask directly to the ma'am, or you can put your question in the chat box also. I think there is one question from our CMD, Dr. Sundar Kataria, sir. Yeah, sure, He's sir. raising the hand. So please welcome, sir. Hello, Welcome, sir. welcome. Yeah. Very good afternoon, and
Thank you very much, Mr. Somani ji and Divya, Chartered Accountant. You have Pleasure, covered, sir. yeah, thank you. You have covered quite a lot because it is really, you have almost covered bird eye view of the presentation of the budget, what are changes and how it is going to affect MSME, startup, and all those things. So information is very, very good. It was difficult to digest immediately. I know, sir. I understand that. No, no problem. But we know that there are a lot of changes which government of India has made, and our finance minister Sitaraman, of course, is a committee who makes it, and really it is quite a benefit to our industries, and I'm sure it will take India, Bharat to greater height, especially focusing nuclear energy, focusing your this one small startup and new entrepreneurs, so women entrepreneurs. So it is really going to help you. And a lot of funds are being utilized for agro industries, focusing on that one. I have one a few questions. When you talk about the benefits, now benefits for MSME was limited to micro and medium. Micro and small, sir. Sometimes they are limited to Uh, micro mi- and small. Micro and small, not the medium. Yes. Why the medium is left out? So in some schemes, they want to promote this micro and small. See, normally what happens is like I mentioned about the Samadhan scheme. That is basically when you uh, are not able to get funds from the other party. You have sold the goods on credit, but the other party is not paying you. So again, a lot of litigation happens and a lot of cost is involved, which micro and small entrepreneurs may not be able to cover up. So they forego their cases. So for them, basically this scheme was introduced that maybe the entrepreneurs which have a good capacity, they can go to the courts, but why you are left out, you can also approach the government and we will help you out in that. So that Yeah. way schemes are formulated. They sometimes No. want to promote micro more, they sometimes want to promote all the three. So this, depending on the scheme, sir, they do this variation. Yeah. Anyway, they increased the turnover and all those Capacity. things, Yes, 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 which yes. is almost doubled now from the Yes, sir. last year. 100%. 100%. That is quite good. Hmm. So another my question was there, a lot of money has been earmarked for new medical institutions. Right, sir. Almost every year they have planned for 5 years. That is excellent. My question is why we don't develop our own Ayurveda, because there was nothing done by government on Ayurveda, where Ayurvedic is more is beneficial than the allopathy. Of course, we don't say modern word is there. Allopathy helps you to get treatment very fast and you get cured very fast. But Ayurveda also, government should have put little more efforts, Let me tell you more about budget. Rajasthan. In the recent Rajasthan budget, they have allocated a separate fund for the Ayurvedic institutes. So in Ajmer itself, where I am residing, they are deciding to open an institute just like IIT and all for the Ayurveda. So this is what they have proposed. I am not sure by what time this will come up, but yes, it is in their mind, sir. So Hmm. at state level, they might have this kind of thing. At central level, they are just portraying it in one word, that is medical institute. Yeah, that because that scheme will take time to come. Yes, sir. Yes, sir. Uh, anyway, they should have kept some provision of budget for Ayurveda also, because Ayurveda needs like packaging and marketing and reaching to the people is very much lacking. Yes, sir. So again, So sir, if anyone is doing something in Ayurveda and they can classify themselves as a startup, they will get a good benefit out of it. thank you. It is a very lively and very covered almost every aspect. So we'll There's have one one more question in the chat registration. box. Someone just mentioned the question.
Vijay Vishwakarma ji, if you can just unmute yourself and you can ask, or Sure. if you want me to take that. Yeah, back to Vaibhavji. Ma'am, I have one question. Yes, sir. In a new scheme, 4 lakh to 8 lakh, Yes, there is some tax. 5% of And, as per news, there is tax-free income of 12 lakh. yes, sir. And suppose if for example, my income is 4 lakh 10,000, then I have I have to pay income tax, or I'm not supposed to pay income tax. So what will happen is you will be opting for the new. Let us take you will be opting for the new regime. So what will Okay. happen is till 4 lakh the tax is nil. For the balance 10,000 you will be marked as 5% tax. So on 10,000 5% is like 500 rupees, right? Okay. And Then again you will have a rebate 87A, section 87A, which is rebate. It says that till 60,000 you will not be paying any tax. So 500 is obviously lesser than that. So you will have all that as a rebate, and you will not be you will not be liable to pay any tax. That is how it will be calculated. Firstly, your tax will be computed, and then you will be given a rebate, and that is how net effect of that will be seen. okay. I hope I have made myself clear, sir. Earlier, if you remember, it was 5,000. Till 5,000, rebate was given. If your tax liability is 5,000, till 5,000, it was no tax. Okay. Now it has been made 60,000, sir. Till 60,000, if your tax is coming 60,000 also, you are not supposed to pay it. Okay. Okay. Thank you. Ma'am, there is a question in the chat box from Mr. Vijay Vishwakarma that Yes. Anything which is more focused towards private limited company. Yes, ma'am. Again, the private limited company can be classified as a startup also. You have to see what is the manufacturing technique which they are using, or what is the product which they are manufacturing. If they can classify themselves as a startup, you should go for it. One thing is that. Second thing is again that I have mentioned that credit cards will be given to this micro, small, and medium sector enterprises. So micro and small basically. So again, if this private limited company comes under the definition of MSME, then again they will get the benefit of getting that working capital of credit card till 5 lakhs they can have that. And again, if you are considered as an MSME, so firstly, what I will suggest, sir, if this private limited company, though all companies nowadays they have their Udyam registration, if they have their Udyam registration, then they will have a priority in case of any kind of funding from the bank. So that is what they need. Actually, funds is all what they need. So if you are applying for loan or something, you should apply in the MSME sector rather than saying that we are applying as a private limited company. You should mention that we are asking for the loan in the category of MSME or this startup. That is something which you should mention. And again, one more thing we saw here was they have a collateral free loan availability. So till 10 crores or 20 crores, whatever their classification is, accordingly, they can have the loan up to that limit. I mean, 10 crores or 20 crores of loan, collateral free loan they can have. Then again, if this private limited company is into export, then again, a lot of benefits will be there, sir. If it is in the food processing sector, separate schemes will be there. So it is not just about how a organization is made up. You have to now see what kind of product it is manufacturing. For each and every industry specific, nowadays you have government schemes available. So that way you can always guide your clients, sir. Ma'am, also, hello, Yes, sir. am I audible? You are audible, sir. Ma'am, What's your is there anything, any relief in charges for a private limited companies? Because earlier there were so many charges under ROR, I think
So is there any relief given in this budget? Charges in the sense, I mean, kind of during sub. registration or after registration of a So nothing private is limited about company. that. So all those rules are still there. Whatever, I mean, the incorporation stamp duty which was levied earlier, it is the same because there is no change in the Stamp Act or anything like that. All that stuff is still the same, but at the same time, again, sir, they will have a lot of benefit of subsidies. That is what you. Okay, thank you so much. Yes, sir. In exports, I mean, since if they are into exports, then a lot of promotion schemes will be there. So it will be easy documentation for them. Some a centralized portal will be there so that they can easily enter into those trade transactions, which will help them ultimately. Thank you. Okay. So, ma'am, we can wait for another few minutes. If anyone have any questions, they can ask, ma'am, or they can put in the chat. Sure, sure. So I repeat, if anyone have any question still, so you can ask ma'am directly, or you can put your questions in the chat box. So I think, ma'am, there is no more questions. So can we move ahead? Sure, we can wind up the session. Okay, ma'am. So thank you, ma'am. Thank you, thank you. Thank you everyone for patient hearing. And let's see what's there in the new direct tax bill which we will be having. Okay, thank you. So our next session is on 15th Feb 2025 on topic ISO 13485 2016 compliance requirements. It shall be taken by Ms. Mithila More, founder of Aspire Qualitech. She shall cover risk management, design and development, regulatory requirements, followed by question and answer session. ICS is pleased to provide you all its research and development, integrated management system, that is QMS, CMS, and NoHSS, excellence in education management, ISO made easy in Gujarati, Marathi, Telugu, and Hindi. For reading any of the above books, please contact Ms. Sushma Kendalkar on the given contact details. Feedback form, please register on www.sadgunsung.org and go in your login and give your valued feedback to us. So thank you, Divya ma'am. Thank you all the participants and delegates to being part of today's Sadgun Sun. And also we have our official YouTube channel. On that you can find all our previous sessions recording. So please visit also there. So now it's time for officially close the session. Thank you everyone. Have a nice day.